students. Welcome to Super Grads, and I am your English mentor, Sana Jaffrey. So, welcome to the Power Concept series. I hope you've been watching and benefiting from all the sessions, right? So, what do I have in store for you today? Today, we have the session on grammar essentials. And being true to its name, I have come up with 7 essential rules, most important rules of grammar. Well, as such, it'll be really rhetorical to say that these are the most important rules because there are numerous rules in grammar which are very important. But these I've just cherry picked some rules which I believe students often fumble with, and they have been appearing over and over in all your examinations. So it's a must to know these rules, right? अब इसमें से कुछ रूल्स हो सकता है आपको आते भी हैं, that will be great, but then I'm sure it will be a nice reinforcement for you people. Fine, so I'm sure ये पावर कॉन्सेप्ट्स जब आप इंप्लीमेंट करोगे क्वेश्चंस में तो ग्रामर सॉल्विंग और एक्यूरेट हो जाएगी आपकी और इजी हो जाएगी. So this is not just a practice session. I will be teaching some nice and important rules and make sure you remember them and apply them, right? Application is important and practice is important. So let's get started. So the key deliverables आज सेशन में क्या होने वाला है, एक ब्रीफ सा सेशन, power packed session लेकिन, and 7 most essential grammar rules for you, followed by some PYQs based on these rules. Now I have not taken up many PYQs. I could have done that, but focus मैं rules पे रखना चाहती हूँ, and कुछ practice questions भी मैंने बीच बीच में embed किए हुए हैं, right? So let's begin with the first rule. Tense consistency. Now, while many students understand tenses, no doubt tenses, no matter how much you try to understand, students are often very much confused here and there. But अगर आपको tenses का एक overall understanding है, तो it's you know a good news for you because tenses बार बार आते हैं, tenses अलग अलग तरीके से आते हैं. It's the most important टॉपिक ऑफ ग्रामर. और टेंस कंसिस्टेंसी लेकिन फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते, वो टेंसेस के स्ट्रक्चर रट लेंगे, वो सब कर लेंगे, बट टेंस कंसिस्टेंसी को समझिए, इसका मतलब क्या है. मेंटेन द सेम टेंस व्हेन डिस्क्राइबिंग एक्शंस हैपनिंग इन द सेम टाइम फ्रेम अनलेस अ शिफ्ट इन टाइम इज इंटेंडेड. अगर हम ये कह रहे हैं कि अब ये करना जरूरी है जिससे फ्यूचर में हमको अच्छा आउटकम मिलेगा, सो देयर ऑफ कोर्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट फ्यूचर आई विल हैव टू यूज द फ्यूचर टेंस, बट देन हम टेंस में लीप बहुत ज्यादा मार लेते हैं. एक एग्जांपल इसके लिए ये है, शी वाज रनिंग फास्ट देन जंप्स ओवर द फेंस. सो ऑब्वियसली हम पूरी बात पास्ट टेंस में कर रहे हैं, एंड ये एकदम से पास्ट से प्रेजेंट का लीप जस्टिफाइड नहीं है, okay, because we are talking about what actions was she doing in the past, right? So this is the correct version. Let's have a look. She was running fast, then jumped over the fence. We have definitely transitioned from the past continuous here to the simple past because that was the need. But then don't jump, don't leap to future suddenly or to the present tense suddenly. Now you might be thinking कि मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, and we were already aware of that. That's great, but then ये जब लंबे sentences में और complex तरीके से आता है, students do get baffled. Okay, so let's try out a question based on this. देखिए, it will not appear all that easy, right? इसीलिए deliberately I have brought this question. Please try this out. I'm stepping aside. Students, I want you to message the answer to me in the comment section. I know in a while I will discuss the question, but then आपका participation ही तो है जो हमको हौसला देता है और मोटिवेट करता है कि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए. So please write in the comment section what do you think should be the answer. Yes. Can we discuss now? All right. The new regulations are largely meant to curtail small-scale corruption. What is to curtail? To curtail is to limit. But the loopholes present in the law created a sharp increase in white-collar crime. So, normally students क्या करते हैं कि जब grammar-based questions कर रहे होते हैं, तो they never comprehend the sentence and they only try to find out grammatical flaws.
No, that's not so right, because you'll have to understand the sentence, only then will you be able to choose the right tenses required. And sometimes you also have logical errors. You should know what should be the right conjunction here. वो मीनिंग तो समझना पड़ेगा. तो मीनिंग सेंटेंस का क्या है? वो कहता है कि कुछ नए रेगुलेशंस लेके आए वो, क्या करने के लिए? स्मॉल स्केल करप्शन को कर्ब करने के लिए, राइट? लेकिन कुछ लूप होल्स ऐसे थे उस लॉ में जिससे क्या हो गया? व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ गया. व्हाइट कॉलर क्या होता है? नॉर्मली पीपल एट सीनियर पोजिशंस. ओके, वो क्राइम बढ़ गया बिकॉज ऑफ द लूप होल्स इन द सिस्टम, राइट? ओके, नाउ noteworthy here is that what is the tense actually. किस टेंस में? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस? किस टेंस में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो आपको देखना होगा. यहाँ पे तो आर लार्जली बोल दिया, तो मतलब यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस मुझे क्लियरली दिख रहा है. बट द लूप होल्स प्रेजेंट इन द लॉ क्रिएटेड. You'll have to identify the verbs to be able to assess which tense are we talking about. Here we can clearly see that this is simple past. हम किस में बात कर रहे हैं? सिंपल पास्ट में बात कर रहे हैं. सो ये शिफ्ट आपको दिख रहा है. कहां हम पास्ट की बात कर रहे थे? जब ये पूरी चीज पास्ट में हो चुकी है, तो फिर आप आर लार्जली मेंट क्यों बोल रहे हो? फिर इसको भी आपको पास्ट टेंस में करना पड़ेगा. दिस इज टेंस कंसिस्टेंसी. इज दिस मच क्लियर? So let's have a look at the options. The new regulations largely meant to curtail small scale corruption. But अब यहाँ पे verb is missing. We want a verb here. Otherwise, this will not make sense, right? The new regulations are, we only left with the delta. The new regulations were largely meant, fine, to curtail small scale corruption but created an increase in crime. Fine, this makes sense and D is the right answer. So abhi aapne ek pyara sa rule seekha. I hope the rule is clear and you will remember it. And we saw a very nice application of this rule. Over to the next rule. Rule 2. Past perfect का rule बता रहा है, and this is a problem that I have noticed this ample of times while people are conversing and communicating in English. They are very fond of using the past perfect. I had come, I had known, I had done. ये had लगाने का बड़ा शौक होता है बच्चों को. I don't know why, even adults, right? So because clarity नहीं. Past perfect हम बहुत limited situations में use करते हैं, and this is the most important place or situation where we use past perfect. So this is the usage of past perfect tense. हर tense का precise usage समझना बहुत important है. Otherwise it amounts to an error. So what is it? Use past perfect for actions completed before another past action. तो यानी कि जब हम past में दो actions की बात कर रहे होते हैं, right? एक है हमारा एक्शन जो पहले हो गया, राइट? दैट इज एक्शन 1. उसके बाद में हुआ हमारा एक्शन 2. फाइन, हम आज यहां खड़े हैं, दिस इज नाउ, एंड ये हमारी टाइमलाइन है, वी आर गोइंग बैक. तो ये हुआ हमारा एक्शन 1 और उसके थोड़ी बाद में हुआ हमारा एक्शन 2. सो जो ज्यादा पुराना एक्शन है उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर. एंड द एक्शन दैट फॉलोड, जो बाद में हुआ एक्शन, उसको हम सिंपल पास्ट में यूज करेंगे. कीप दिस इन माइंड ऑलवेज. हियर देयर इज एन एग्जांपल फॉर यू. बाय द टाइम शी अराइव्ड द मीटिंग स्टार्टेड. दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. You cannot make it up by using the meeting already started. No, आप कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? आपको इसके लिए कुछ लगाना ही पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक वो पहुंची मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी. सो द करेक्ट वर्जन इज दिस. बाय द टाइम शी अराइव्ड, दिस इज एक्शन 2, द मीटिंग हैड स्टार्टेड, बिकॉज ये इस एक्शन के पहले हो चुका था. Past perfect helps establish a clear timeline and avoids confusion about the order of past events, right? So it has to be used like this. I hope you've understood this, right? Are you ready for the next rule? Great. Hope so. The third rule. Now, what is this?
This is a rule about modifiers, and much to your surprise, you don't find modifiers as independent chapters in any grammar book. So, this is the reason why students have very limited awareness and knowledge about these. And because of lack of knowledge and awareness, they're often not able to spot out errors based on modifiers. So, what do I actually mean by this? See, what are modifiers? Modifiers are like words, they can be often a group of words actually that describe something. तो यानी modifiers क्या हो जाएंगे? Group of words जो adjective की तरह या adverb की तरह काम कर रहे हैं. Fine. So ये adjective phrase, adverb phrase या फिर single one word भी हो सकते हैं. Adjectives या adverbs सबको collectively हम modifier बोलते हैं because they modifier things or actions, as simple as that. So they are actually describing words, to cut it short. अब प्रॉब्लम ये हो जाती है जब आपने उनको मिसप्लेस कर दिया, ओके, या फिर उनका कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं है जिसको वो मॉडिफाई करें. रूल पढ़ते हैं, modifiers should be placed next to the word they modify or describe, and also avoid dangling modifiers where the modifier lacks a subject. समझ ही नहीं आ रहा कि आप किस चीज को मॉडिफाई कर रहे हो, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो. सो बोथ द थिंग्स, राइट? सो for the misplaced one, this is misplaced modifier. Have a look at the sentence. She lost her father at the age of 7. ध्यान से पढ़ना. She lost her father at the age of 7. हाय हाय, फादर 7 years के थे जब उनकी डेथ हो गई. Is this what we are trying to say? How is this possible? So far, biologically, this is impossible. अब आगे साइंस के करिश्मे जो हैं, the wonders of science are limitless. We don't know. अब तक तो हमको ये पता है, at the age of 7 you just can't become a father, right? So obviously ये समझ में आ रहा है कि ये जो expression है, at the age of 7, this is actually a modifier, है ना? It's a describing phrase, but it has been misplaced. ये फादर के साथ लगा दिया तो कंफ्यूजन हो गया. इसको किसके साथ लगाना था? जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है. किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है शी को. When she was 7 years old, she lost her father. So कैसे फिक्स कर सकते हैं? We can fix it very easily. ये जो पूरा का पूरा modifier phrase है, this should be placed as close as possible to the subject that it modifies, right? So हम ऐसा लिख दें, at the age of 7, comma, she lost her father. Totally unambiguous, crystal clear as we say, right? So this was the problem of misplaced modifier. And look at this. Hoping to impress the interviewers, the resume was updated. Hoping to impress the interviewers. This entire phrase, when we speak of, who was hoping to impress the interviewer? Just after this, we have the resume. तो क्या resume impress करना चाह रहा था? नहीं. So the point is, this is the case of dangling modifier, because here the subject is missing. So the best way to fix it is that you add subject to it, right? और इस या फिर इसके फौरन बाद में आप subject लगा दीजिए. Hoping to impress the interviewers, she updated her resume, या he updated his resume, whatever. That's your call. Just provide a subject. तो अब कोई confusion नहीं होगा, because ये modifier इसको she कर रही है ये सब कुछ. She was hoping to impress the interviewers and she updated the resume. Here in this entire sentence, the subject is missing. So this I hope you will keep in mind. मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए पहला ये rule है, they were not aware, right? So I hope you'll find it beneficial. Time to move to the next one. Parallelism. Okay, nice, right? तो parallelism क्या बोलता है? बहुत ही simple ये बोलता है कि parallel structure maintain करो. Okay? Let's have a look at this. When listing items or using structures like not only but also, या फिर list कर रहे आप items, similar चीजें comma 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 लगा के बहुत सारी चीजें mention कर रहे हो, तब you have to ensure that there's parallelism in grammatical form.
Similar things should be put up in similar way using similar structure. For example, she likes reading, to swim and hiking. Now we're talking about her hobbies. What all things does she like? है ना? So when we simply say she likes reading, good. To swim looks abrupt. Why not say swimming and hiking? She likes reading, swimming and hiking. Parallel structures जब भी हम यूज करते हैं तो बड़ी अच्छी सी रिदम बनती है सेंटेंस में एंड दिस इफ यू डोंट यूज इट दिस वे इट डेफिनेटली अमाउंट्स टू एन एरर. So I hope you're comfortable with the error on parallelism. Let's try out a question on parallelism. Okay? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपके सामने क्वेश्चन है प्लीज इसमें एरर ढूंढिए. हाँ जी कुछ समझ आया? All right, you can pause the video if you want and then spot the error. Yes, batao. Let's have a look at it. Mr. Reynolds taught his students that they should get plenty of water, not eat sugary snacks, and being sure they are getting plenty of sleep. Now, this entire thing feels like this is a list of recommendations, right? A list of activities that should be done by Mr. Reynolds. So यहाँ पे all these things are like points and they must have the same structure. But if you carefully look at it, you will realize they should. Now आगे क्या आना चाहिए? यहाँ पे उन्होंने use किया first form of verb. They should do this, they should do that. Then let's continue that, right? They should get plenty water, okay. They should not eat sugary snacks, good enough. And being sure, ये VING क्यों लगा दिया? Let's use a parallel structure, right? So why not say the V1 form and be sure they are getting plenty of sleep. So that's the correction. So your answer will be D. And no error would be E. Fine. This part is erroneous. I've already told you what is the correction. So I hope you've understood what are errors on parallelism. Over to the next one. Rule 5. Now this happens to be a very, very important rule from the topic. This happens to be one of my favorite topics somehow, subject-verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक चैलेंजिंग है एक्साइटिंग है एंड हियर आई होप यू ऑलरेडी नो द बेसिक्स आई कैन नॉट talk about it right from the scratch, but the basic subject verb agreement thing says that singular subjects will take singular verbs, plural subjects will take plural verbs, right? तो वो आपको पता है लेकिन क्या हो जाता है कि sometimes there are some quantifiers like some, all, most of, none, half, a lot of, plenty of. Sometimes there are percentages, sometimes there are fractions. So when all these quantifiers come before the subject, it becomes very confusing for students कि अब हम उस पूरे subject को singular माने या plural माने. क्योंकि subject verb agreement का first step यही है कि आप अपने core subject को identify करो और फिर देखो कि वो singular है या plural है. Because उसी हिसाब से आप verb लगाओगे, right? So I have some examples, in fact, ample of examples to understand this rule. For example, half of the cake. आपका subject ये पूरा expression है half of the cake, but should we treat it as singular or plural? So the rule is कि जितने भी quantifier हैं, इनकी खुद की कोई individuality नहीं. इसके आगे जो noun लगा है, आप उसको देखेंगे. अगर वो singular होगा, तो आप singular verb लगाओगे. वो plural होगा, तो आप plural verb लगाओगे. खत्म. That's the rule. Yani in all these and many more quantifiers that are not even listed here. So in case of all most of the quantifiers like this, you will actually see what noun follows them और उस noun के number के हिसाब से आप चलोगे. ठीक है ना? तो half of the cake, cake तो एक ही है ना, तो singular ही है, इसलिए हम बोलते हैं is gone. और सबसे बड़ी बात है uncountable noun को तो हम वैसे भी singular ही मानते हैं.
राइट. हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज, अब यहां पे क्योंकि एम्प्लॉइज आ गया एंड दिस इज क्लियरली अ प्लूरल थिंग, राइट. ये तो प्लूरल चीज है, दैट वी नो. तो इसलिए यहां पे हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे, आर वर्किंग रिमोटली. डन. मोस्ट ऑफ द ऑडियंस. अब ऑडियंस, ऑडियंस को क्या माने, मतलब मोस्ट ऑफ लगाने से इट वोंट रियली मैटर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द सब्जेक्ट दैट फॉलोज इट. अब वो ऑडियंस है, ऑडियंस द कलेक्टिव नाउन है, वी नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर. तो इसलिए अब हम लगा देंगे was, which is a singular verb. 30% of employees. अब देखो 30%, I told you even percentages, but what are we talking about? Employees. तो वो प्लूरल ही है तो उसको प्लूरल ही मानेंगे एंड वी विल टेक अ प्लूरल वर्ब आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब. So I hope this much is clear. Okay. Are we ready for the next rule? Great. Rule 6. Conditionals. Okay class, तो conditionals बहुत आते हैं आपके एग्जाम में और बच्चों को conditional पता ही नहीं होते. I've seen that. And for conditionals, what are conditionals? Right from scratch नहीं पढ़ा सकते आपको. But then these are sentences that often talk about some imaginary or hypothetical situations, that talk about some past situations and their imagined outcomes. Or sometimes we simply talk about what will happen if a condition is fulfilled. तो on the basis of that, बहुत range of situations को conditionals cover करते हैं. There are 4 conditionals. If you don't know about conditionals, please Google them up. You will find ample of resources where you can study conditionals. अब conditionals के बारे में ये चीज है कि उनका appropriate verb form आपको लगाना पड़ेगा for each type of conditional. You'll have to stick to the structure. And conditionals में मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा एरर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं थर्ड कंडीशनल में, जो सबसे एडवांस्ड कंडीशनल है. तो आज इसी का स्ट्रक्चर बता रही हूं और पीवाईक्यू भी इसी पे बेस लेके आई हूं मैं, राइट. सो थर्ड कंडीशनल होता है ये बताने के लिए कि अगर पास्ट में ये कर लेते तो वो हो जाता. यू आर एक्चुअली ब्रूडिंग अबाउट द पास्ट. जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है एंड यू कैंट रियली गो बैक इन टाइम एंड चेंज इट. यू आर इमेजिनिंग इट्स आउटकम, अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, कितना बढ़िया होता, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस. एंड उसका स्ट्रक्चर हमें समझना होगा. टॉकिंग अबाउट द इफ क्लॉज, इसके साथ में आएगा क्या, पास्ट परफेक्ट. You cannot change it, you'll have to memorize the structure, that is the point. Okay. And in the main clause, we will have would have plus V3, the third form of the verb. Now, in place of would, we can even have might or could or should, depending on the context and the need, right? But most of the time, would he required hota hai. So this is the structure. Now, what do we mean by past perfect? Past perfect simply means had plus V3, right? This we already know. Fine. So I hope the structure is clear. Now let's have a look at this given sentence. If he would have studied, he would pass the exam. So my dear, would दो बार तो किसी भी कंडीशनल में नहीं आता, so it's completely off the mark. So यहाँ पे he clause में, sorry, if clause में क्या आना चाहिए था, past perfect आना चाहिए था, right? So it should be if he had studied. Had plus V3, you can tally the structure, it is simple. And he would pass, again nahi, kya aana chahiye, would have passed. So you can say he would have passed the exam. अगर वो पढ़ लेता तो वो एग्जाम पास कर जाता, लेकिन ना उसने पढ़ाई की और ना ही उसने एग्जाम क्लियर किया. आई होप दिस इज क्लियर. एंड एक रूल कुछ है, ये आईपीमैट इंदौर के क्वेश्चंस हैं, ये कंडीशनल्स पे बेस है. जरा करके बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर. Justin couldn't understand why his friend had refused to work in a company that offered him a huge salary. If it had been him in his friend's place, he would. If he had been, अगर वो होता, दिख रहा है आपको past perfect had plus V3, अगर वो होता तो वो क्या करता. Okay, he would
अब देखो ये है ना, आपको क्या करना होगा, वुड हैव V3, सिंपल। क्या करें अब, देख लीजिए विच ऑप्शन सेटिस्फाइज दिस स्ट्रक्चर। he have definitely, have accepted, ये दो बार have। हम्म, अच्छा अंडरलाइनिंग की बात है, यहां से अंडरलाइनिंग है, तो ही वुड तो है ही वुड हैव डेफिनेटली एक्सेप्टेड, लुक्स गुड। डेफिनेटली एक्सेप्ट V1 नहीं आ सकता, राइट हैव के साथ में V1 इस तरह से नहीं आ सकता। he would definitely accepted, no have, right, and दो बार have, बेस्ट चॉइस सी। आई होप इट इज क्लियर। सिंपली हमने पहले ही बोल दिया था, वुड हैव डेफिनेटली एक्सेप्टेड आना चाहिए था, तो सी इज द राइट आंसर। आईपीमैट इंदौर 2023 का क्वेश्चन कितना आसान है, राइट। ओके, लेट्स डू दिस वन, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। 2024 का क्वेश्चन है, करो करो। If I had known that you needed to go to the airport yesterday, I could drive you there. अगर मुझे पता होता कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना था तो मैं तुम्हें ले जाती, ड्रॉप कर देती। क्लियरली अ केस ऑफ थर्ड कंडीशनल, तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। आई वुड हैव ड्रिवन यू देयर, है ना। वुड ड्राइव तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर एज पर द entire format that we discussed. The third conditional, should have driven you there. क्या should सही मॉडल होगा यहाँ पे? I should have driven you. No, it should be I would have. क्योंकि should तो is more used in the sense of an advice. So this does not fit in. Should drive to is out of question. So the answer will be C. So easy it is. But friends, we are left with one last rule, right? So let's go back to rule 7. And this is a rule based on conjunctions, but it very commonly appears in your exams. When using correlative conjunctions, मतलब वो conjunctions जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे neither, nor, either, or, not only, but also, etc. The elements they connect must be grammatically parallel, meaning they should be the same part of speech or structure. अब यहां पे देखो, शी नीदर नॉर साथ आते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अब यहां देखो, शी नीदर इज गुड एट साइंस नॉर एट आर्ट्स। अब नीदर के बाद क्या आया, इज आया, जो क्या है, एक वर्ब है, और यहाँ पे नॉर के बाद एट आया, जो क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या ये पैरेलल है, क्या ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच है? नहीं है। तो हम क्या करें कि कॉमन चीज बाहर निकाल लेते हैं, हम ऐसा लिख देना इसको, शी इज गुड, या शी इज गुड एट नीदर साइंस नॉर आर्ट्स। वो अच्छी है ना ही साइंस में ना ही आर्ट्स में। अब यहां पे देखो, नीदर के बाद साइंस आया जो नाउन है, नॉर के बाद में आर्ट्स आया जो भी नाउन है। सो पैरेलल हो गया, सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, ऑलवेज रिमेंबर। आई हैव अनदर एग्जांपल, ही नॉट ओनली बिहेव्स रूडली बट ऑल्सो स्ट्रेंजली। व्हाट इज द करेक्शन हियर? कैसे करेंगे इसको? यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद आ गया बिहेव्स जो एक वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद स्ट्रेंजली आ गया जो एक एडवर्ब है। क्या सेम पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा। सो व्हाट डू वी डू? लेट्स ट्वीक इट स्लाइटली। जो कॉमन चीज है बिहेव्स, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ही बिहेव्स नॉट ओनली रूडली बट ऑल्सो स्ट्रेंजली। बढ़िया, एवरीथिंग इन सिंक। अब देखो, नॉट ओनली के बाद क्या आया? रूडली, विच इज एन एडवर्ब, बट ऑल्सो के बाद क्या आया? स्ट्रेंजली, विच इज ऑल्सो एन एडवर्ब, एंड नाउ इट इज टोटली पैरेलल। फाइन। सो आई होप ये रूल शायद आपको नहीं पता था,
अब पता चल गया है? Okay, I hope you will remember these rules. Please jot them down and never forget to implement them and apply them. Okay, so that's all for today, class. Thank you so much. And that's all. Keep watching. I have one more session lined up for you, right? So I hope to see you again. Bye bye. Take care.